Hello everyone, I'm from Netsol Water Solution. Today, through online platform, I would like to share my views on the topic how to increase the efficiency of wastewater treatment plant. But first of all, I want to ask you some questions. Are you facing some increased cost in because of your wastewater treatment plant? Are you guessing that your wastewater treatment plant are not working as per they have to work with their efficient way? If you are thinking, then must be that your wastewater treatment plants need some improvements to get back on their track. Yes, sometimes it happens that wastewater treatment plants, while working for a long time, they lost their tracks. Therefore, it is always a need that wastewater treatment operators always analyze and regularly analyze their treatment plants whether the treatment plants are working effectively or not. If you are facing the same issue, don't you worry because we, the Netsol Water Solution, the best manufacturers of wastewater treatment plants and water treatment plants, are here to help you out in increasing the efficiency of wastewater treatment plant. And not only this, will help you out to achieve the potential cost savings by reduction the wastewater. And there are some steps which we need to follow. For example, the first step is to conduct a self assessment. आप जानते हैं ये हमारा इतना यूज़फुल एसेट है हमारी यूटिलिटीज़ के लिए कि ये हमें ये आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है कि कहीं हमारे कोई किसी परफॉर्मेंस में कोई गैप तो नहीं है। जब हमें गैप का पता चल जाता है तो हमें कुछ स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी पड़ती हैं जिससे हम एक गैप को रिकवर कर सकें। द सेकेंड स्टेप विच वी कैन डू इज़ दैट वी कैन इवेल्यूएट द टेक्नोलॉजी। जितने भी हमारे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ मैनेजर्स हैं उन्हें ही इवेल्यूएट करना चाहिए अपनी टेक्नोलॉजीज़ को एंड उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें रिप्लेस करना चाहिए विद एन एफिशिएंट प्रोडक्ट या फिर एफिशिएंट सॉल्यूशंस के साथ। हमें थर्ड उसके बाद हमें हमारे जितने भी हमारे पंप्स लगे होते हैं हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स के उनके ऑडिट को हमें परफॉर्म करना चाहिए ताकि हमें उसका भी अंदाज़ा लग सके कि हमारा पंप सही चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं और अगर वो चल रहा है तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। देन हम लोग का हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप हो सकता है कि हम इंस्टॉल करें स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ का। जब भी हमारे वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात होती है, जितनी भी हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, हमें हमेशा कंसिडर करना चाहिए कि हमें कहीं पे भी स्मार्ट मीटरिंग टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम मॉनिटर कर सकें हमारे जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हम उस पर नज़र रख सकें। एंड द लास्ट थिंग इज़ विच वी कैन डू इज़ द वी कैन रिव्यू द डाटा। This is the last step. Through this, we can get the access and analyze the data to evaluate the infrastructure of the performance and identify that what are the problems and what further we need the improvements and what further advanced solutions we need. These are the simple steps which can help you out in improving the efficiency of wastewater treatment plants. If you're still thinking that how can all these things be done, then feel free to contact the Netsol Water Solutions at any time because our technicians and our operators are always there to help you out and in always there to give you the technician guide for your treatment plans. In the end, I would like to say, don't worry about your cost bills because we are here to provide you the best efficient treatment plans to reduce the potential cost. Thank you. In the end, don't forget to like, share, and subscribe our channel.